I am Kiran Preet Kaur from Feb IELTS, and today I am going to present a table which was seen in the academic IELTS writing test in India on 1st Feb 2020. The table below shows the information about spending on health in 5 different countries in 2002. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So this is spending on health according to the percentage of GDP, countries Japan, Italy, France, Germany, USA, total spending and public spending and private spending. So these are the columns. So let's see how to go about such a graph. The table illustrates the total health spending, the public health spending, and the private health spending as a percentage of GDP in 5 countries. Overall, the US spent the maximum on health, and its private health expenditure was also the maximum. Here you can see US spent the maximum. This is the maximum. Okay, and its private health spending, this is private health spending, this was also the maximum. By contrast, Germany had the highest public health overlay. So Germany had the highest public health overlay. Overlay is synonym of spending, expenditure. Furthermore, in all the countries, public expenditure outnumbered the private expenditure. So you can see public expenditure is more than the private in all the countries. In detail, the US spent about 14.3% of the GDP on health, out of which 8% was the public spending while 6.3% was private expenditure. The next highest expenditure was noticed for Germany at 11.4% spending on the whole, and with figures of 8.6% for public spending and 2.8% for private spending. In the rest of the countries, the total expenditure was less than 10% of the GDP. So here the total expenditure in the rest of the countries, it was less than 10% of the GDP. France spent about 9.3% of the GDP on health, while the figures were roughly 7.5% each in Japan and Italy. So roughly I've used the word, so just roundabout for the nearest figure like 7.5. With regards to public expenditure, roughly 7% was spent by France, while about 5.5% each was spent by Japan and Italy. Finally, the private expenditure in these countries accounted for 2.5% each of the GDP for Italy and France and 1.4% for Japan. So this is how we go about such a graph. Now I'll be explaining it in Hindi also. ये टेबल टोटल हेल्थ स्पेंडिंग, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग और प्राइवेट हेल्थ स्पेंडिंग इलस्ट्रेट करता है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी के परसेंटेज में 5 countries. So this is just one sentence which is paraphrasing the question. Then after the introductory sentence overview, overall US ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया हेल्थ पे और प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर भी उसका सबसे ज़्यादा था. यूएस का सबसे ज़्यादा खर्चा था, टोटल स्पेंडिंग देखो यूएस की सबसे ज़्यादा है, और उसका प्राइवेट स्पेंडिंग भी सब कंट्रीज से ज़्यादा है. पब्लिक ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि वो जर्मनी की ज़्यादा है. सो ओवरऑल सबसे ज़्यादा है और प्राइवेट स्पेंडिंग भी सबसे ज़्यादा है. The next highest expenditure, अच्छा ये उसका है. Overall the US spent the maximum on health and its private expenditure was also the maximum. By contrast, तो इसके उलट, बाय कंट्रास्ट मीन्स इसके उलट, जर्मनी हैड द हाईएस्ट पब्लिक हेल्थ ओवरले. तो पब्लिक स्पेंडिंग जर्मनी की सबसे हाईएस्ट थी. ये देखो, ये किसी और की इतनी नहीं है, 8.6 इसकी हाईएस्ट है. फर्दरमोर इन ऑल द कंट्रीज, फर्दरमोर सारी कंट्रीज़ में पब्लिक एक्सपेंडिचर आउट नंबर द प्राइवेट एक्सपेंडिचर. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सारी कंट्रीज़ में, सब कंट्रीज़ में देख लो, प्राइवेट से ज़्यादा है. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आउट नंबर द प्राइवेट एक्सपेंडिचर. इन डिटेल, अब ये ओवरव्यू हो गया. ओवरव्यू में सिर्फ मैक्सिमम, मिनिमम और ऐसा कंपैरिजन डालना है. देयर इज़ नो डेटा टू बी गिवन हेयर. फिर डिटेल में आ जाइए. डिटेल में यूएस ने 14.3% ऑफ द जीडीपी स्पेंड किया हेल्थ पे, जिसमें से 8% पब्लिक स्पेंडिंग थी और 6.3% प्राइवेट स्पेंडिंग थी.
जो सेकंड हाईएस्ट था, नेक्स्ट हाईएस्ट एक्सपेंडिचर था, वो जर्मनी ने किया एट 11.4% ऑन द होल, विद 8.6% पब्लिक स्पेंडिंग है और 2.8% प्राइवेट स्पेंडिंग है। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में टोटल एक्सपेंडिचर था, जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो लेस देन 10% था। फ्रांस ने 9.3% स्पेंड किया और बाकी दोनों का मैंने एवरेज ले लिया है, तो 7.5% ईच लिखना है। 7.5% ईच इन जापान एंड इटली। अगर हम पब्लिक स्पेंडिंग की बात करें तो 7% फ्रांस ने खर्चा है और 5.5% ईच कर दिया बाकी दोनों कंट्रीज़ का। एंड देन फाइनली प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन दीज कंट्रीज था जो है दैट वाज नियरली 2.5% ईच इन फ्रांस एंड इन इटली एंड फ्रांस, और एंड 1.4% फॉर जापान। तो इन दोनों का रफली सेम एक फिगर दे दो जो नियर है, नियर अबाउट है। एंड देन जो फ्रांस की है, जापान की है, वो 1.4% है। तो इसमें सारे डेटा के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दिया है और कंपैरिजन की लैंग्वेज है ओवरव्यू में। सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट सच ए ग्राफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली।